ગુજરાત સરકારે આ બંને કંપની પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે। કફ સિરપ બનાવતી ગુજરાતની આ બે કંપની સામે પ્રતિબંધ લાગ્યો છે। ગુજરાતમાં 624 પેઢીઓ આવી દવા બનાવે છે। તમામ દવાઓની સરકાર તપાસ કરશે। બાળકો માટેની આવી દવાઓની સરકાર ગંભીરતાથી તપાસ કરશે। ગુજરાતમાં બંને કંપનીઓની દવાનો જથ્થો નથી મળી આવ્યો। શંકાસ્પદ જે કંપનીઓના નામ આવ્યા છે તેની સામે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। આ બે કંપનીઓ કોલ્ડ સિરપ બનાવે છે। ગુજરાતમાં આવી દવાઓના વેચાણની તપાસ કરવા માટે આદેશ આપવામાં આવ્યા છે। मध्य प्रदेश अंदर नॉट ऑफ स्टैंडर्ड जे दवाओं थी थी ए पैकीनी जे बे दवाओं जे आपणे अहींया सरकार में GMACL द्वारा खरीदता नहीं, परंतु आ विक्रेताओं आ जे ओरल मेडिसिन्स बाळको माटेनी कफ सिरप जे बनावी रह्या हता ए बंनेनुं त्यां मध्य प्रदेशनी अंदर थी आपणने मळी के आ नॉट ऑफ स्टैंडर्ड दवाओं जाहिर थई छे। आपणे त्यां तरत तपास करी ए तपास करी अने एमनी जेटली पण बेच बजार में गई है ए बेच बजार में रिकॉल करवानुं सरकार तरफथी कहेवामां आव्युं छे। अने आमां आपणा FDCA ना अधिकारीओ छेल्लामां छेल्ली बोटल ना आवी जाए त्यां सुधी मॉनिटरिंग करी आ तमाम बोटलो पाछी आवी जाए, आ दवाओ पाछी बजार में खेंचाई जाए एनी चिंता पण राज्य सरकारे करी। दुकान उपरथी सीधी ए जे एनुं वितरण थतुं हतुं एमां टोटल उत्पादित संख्या अने साथे वितरित संख्या आ बंनेनो ताळो मेळवी अने तमाम दवाओ जे अत्यारे बजार में हयात छे ए तमामे तमाम परत आवे ए माटेनो प्रयत्न पूरा जोशथी FDCA ना अधिकारीओ प्रत्येक दुकान अने प्रत्येक दुकानों सुधी केमिस्ट एसोसिएशन ने पण आनी जाण करी छे के आ बे कंपनीओनी कोई दवाओ होय तो ए दवाओ तात्कालिक परत एने आपवी। तो आ कंपनी पर प्रतिबंध तो लगावायो छे, परंतु हजू पण तपास यथावत छे। तमाम दवाओनी सरकार द्वारा पण तपास करावामां आवशे। तपासना आदेश आपी देवाया छे। बंने कंपनीओनी तपासमां कोई पण जथ्थो अत्यार सुधीमां नथी मळी आव्यो, परंतु वधु तपास थाय तो जथ्थो क्यांक ने क्यांक मळी आवे तेवी पण शक्यताओ छे। साथे ज आ कंपनीओ द्वारा कया कया राज्योमां सप्लाय करवामां आवती हती अथवा तो अन्य कोई देशमां सप्लाय करवामां आवती हती के केम ते दिशामां पण तपास करवामां आवशे। गुजरात सरकारे आ बंने कंपनीओ पर प्रतिबंध लगावी दीधो छे। तो गुजरात सरकार द्वारा आ कार्यवाही करवामां आवी रही छे अने आगळ पण आ कार्यवाही यथावत रहेशे। गुजरातमां 624 पेढीओ आवी दवाओ बनावे छे अने तमाम दवाओनी सरकार द्वारा तपास करवामां आवशे। बाळको माटेनी आवी दवाओनी सरकार गंभीरताथी तपास करी रही छे। गुजरातमां बंने कंपनीओनी दवाओनो जथ्थो नथी मळी आव्यो। शंकास्पद जे कंपनीओना नाम सामे आव्या छे तेनी सामे गंभीर रीते तपास करवामां आवी रही छे। आ बे कंपनी कोल्ड सिरप बनावे छे। गुजरातमां आवी दवाओना वेचाणनी तपास करवा माटे आदेश आपवामां आव्या छे। तो आज मुद्दे अमारा संवाददाता सचिन लाइव जोड़ाया है વધુ अपडेट साथ। सचिन जणावशो के जे पण आ कफ सिरप हतो जेनो राजस्थान अने गुजरात राजस्थान अने मध्य प्रदेशना बाळकोना मृत्यु थया हता अने तेनुं मूळ हवे गुजरात सुधी पहोंच्युं छे, कई रीते तपास करवामां आवी रही छे? हिरल सौथी मोटी बात अहींया ए छे कि आ जे कफ सिरप छे कफ सिरप में जे पण कफ सिरप पहला जेमां आ मात्रा मळी DEG एटले कि आ डायइथिलीन ग्लाइकोलनी जे मात्रा मळी छे त्यारबाद मध्यप्रदेश सरकारे आ जे दवा कंपनीओ छे जे दवा कंपनीओ कफ सिरप बनावे छे तमाम दवा कंपनीओमांथी लगभग 13 जेटली कंपनीओनो जे छे ए तपास आ लोकोए हाथ धरी छे अने जे मेडिकल डिपार्टमेंट छे एना द्वारा तपास हाथ धरवामां आवता गुजरातनी जे बे प्रोडक्ट है एमां खास करीने रेडनेक्स अने एक बीजी शेप फार्मास्युटिकल्स कंपनी जे दवाओं है बंने कफ सिरप जे छे ए बंने कफ सिरप सब स्टेन्डर्ड मळ्या अने स्वाभाविक आ जे घटना है घटना ने लईने तमाम राज्यों में आनी असर जोवा मळी रही है। पंजाब में पण आ जे दवा है ए दवाओं पर प्रतिबंध लगावामां आव्यो छे। जे पण मेडिकल स्टोर है कि जे पण डॉक्टर्स है ए आ दवा ने प्रिस्क्राइब न करे ए प्रकारनी सूचना जे छे ए सरकार तरफथी आपवामां आवी रही है। महत्वनी बाबत अहींया ए छे कि केराला JIDC जे छे एनी अंदर आवेली आ जे रेडनेक्स फार्मास्युटिकल्स कंपनी जे कफ सिरप है ए कफ सिरप में जे डायइथिलीन ग्लाइकोलनी जे
ડિસ્ટ્રીબ્યુટ નહીં કરવા કે નથી એને સેલ નહીં કરવાનો જે આદેશ છે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ નહીં કરવા કે નથી એને સેલ નહીં કરવાનો જે આદેશ છે આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. અને બીજી બાબત, રાજસ્થાનમાં પણ આ જ પ્રકારની ઘટના બની અને રાજસ્થાનમાં જે ઘટના બની છે એ બાબતને જોતા પણ આ જે મામલો છે એ મામલો ખૂબ ગંભીર બની જાય છે. 16 બાળકોએ તો મધ્યપ્રદેશમાં જ જીવ ગુમાવ્યા છે, સિવાય રાજસ્થાનમાં પણ આ જ પ્રકારે બાળકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે. જેમાં આ કેસોન ફાર્મા કરીને જે કંપની છે જયપુરમાં જે દવા બનાવતી હતી એ દવાની કંપનીની જે કફ સિરપ છે સામે આવી. હવે આ જે બાબત છે બાબતમાં ડ્રગ કંટ્રોલર ઓફ દ્વારા પણ ઇન્ટરફેર કરવામાં આવ્યું છે અને તમામ જે પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. એમાં જે પણ આ દવાઓ છે દવાઓ બજારમાં ન આવે અને સાથે જ સાથે કયા પ્રકારના સ્ટેપ્સ આ પ્રકારની બિલકુલ સચિન, માહિતી બદલ આપનો આભાર. તો શિવ ફાર્મા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને રેડનેસ ફાર્માસ્યુટિકલ લિમિટેડ સામે હવે એક્શન પ્લાન ઘડવામાં આવ્યો છે. તેમની સામે કડક તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે.